Hi all of you, a very good morning and welcome to my YouTube channel Tech in Maths. My name is Kumar Das. इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन JEE PYQ 2019 जनवरी सेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ. हियर वन ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट इफ y इक्वल टू y ऑफ x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग y1 इक्वल टू 1, देन y1/2 की वैल्यू हमें फाइंड करना है. सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पहले मैं लिख लेता हूँ. व्हाट इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन? गिवन DE डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है हमें x dy by dx प्लस 2y इक्वल टू व्हाट x स्क्वायर. सो यहाँ से x से डिवाइड कर देता हूँ. सो दिस इज बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो dy by dx प्लस 2 by xy इक्वल टू व्हाट x स्क्वायर बाय x, राइट. x स्क्वायर बाय x को कैंसिल आउट. सो मैं इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म से कंपेयर करूँ तो dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू. सो हमें यहाँ से क्या मिल गया? p जो है p इज इक्वल टू 2/x. p की वैल्यू हमें 2/x मिल गया. एंड q क्या है हमारा? q इज x हो गया, राइट. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें फाइंड करना है टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन. इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? e टू द पावर p dx. सो e टू द पावर p dx, सो दैट इज व्हाट 2/x dx. सो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, right. So e to the power क्या हो गया? 2 log x ln x. So we can write here the e to the power log x square, right. Log x square, e to the power log x square, so it will be equal to what? X square. Basically you can learn this thing that e to the power log function of x अगर होता है, e to the power log function of x है तो ये fx के इक्वल होगा. सो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या फाइंड कर लिया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है दैट इज व्हाट हियर x square. Integrating factor is your x square, right. Integrating factor. Now its solution is what? Its solution is y into differential equation का जो solution होता है linear differential equation का, वो होता है y into if and then equal to what? Integration q into if dx plus c, right. dx plus c. So y into if क्या है हमारा? x square है, into q क्या है? x है, और if की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर, राइट. x स्क्वायर dx प्लस c. सो वी गेट हियर द इंटीग्रेशन ऑफ x क्यू, बेसिकली दैट इज x टू द पावर 4/4 हो गया, प्लस c y x स्क्वायर. सो यहाँ से हम y फाइंड कर लेते हैं. तो y इज व्हाट? x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस x स्क्वायर डिवाइड हो गया प्लस का c बाई x स्क्वायर. सो वी गेट हियर द y ऑफ x, बेसिकली y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड दैट इज व्हाट? x स्क्वायर बाई, कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं, right. So this is x square, so x square by 4 plus c by x square. So we get this result y of x. now हमें क्या बोला गया है यहाँ पे? अगर क्वेश्चन को देखें हम तो हमें कंडीशन क्या गिवन है यहाँ पे? y1 पे 1 है, y1 जो है वो 1 के इक्वल है. सो आई राइट हियर द y1 इक्वल टू 1. सो अप्लाइंग हियर तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस c by 1. y1 इज 1, सो 1/4 प्लस c. सो c की वैल्यू क्या हो गया? 1 माइनस 1/4, दैट इज व्हाट? 3/4. दिस इज व्हाट? 3/4. c की वैल्यू आ गया 3/4. सो देयरफॉर y ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूँ? y ऑफ x को मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर बाई 4 प्लस c की जगह पे क्या हो गया? c की जगह पे 3/4 x स्क्वायर. सो वी कैन राइट हियर 3/4 x स्क्वायर, राइट. एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड हियर द y 1/2. सो वी विल पुट हियर द y 1/2, x की जगह पे 1/2 पुट कर रहा हूँ मैं, y 1/2. सो दिस इज व्हाट? 1/4, 1/2 का होल स्क्वायर हो गया ये, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 एंड 1/2 का होल स्क्वायर, राइट. सो वी गेट हियर 1/4 एंड ये क्या हो गया? 1/4 प्लस व्हाट? 3 ये हो गया 4 इंटू 1/4, राइट. सो 4 से 4 कैंसिल. सो दिस इज व्हाट? 1/16 प्लस 3, राइट. सो ये क्या हो गया? 1 प्लस 48/16, राइट. सो 49/16. इफ यू सी द ऑप्शन, so yes, we have the correct option here, 49/16. Option 3 is the correct option. Let us continue with the next one. Okay, so the next question here is question number 2. So we have given here the differential equation dy by dx plus 3 by cos square x y equal to 1 by cos square x, right. x belongs to minus pi by 3 to pi by 3 and y pi by 4 पे वैल्यू क्या है? 4/3. then we have to find what? y minus pi by 4 की वैल्यू क्या होगी? So this is also a linear differential equation. So first I write here the given differential equation. So given differential equation क्या है हमारा? dy by dx. So I write here dy by dx plus what? 3 by cos square x. So we can write this as 3 sec square x y,
right? 3 sec square x y equal to what? 1 by cos, so we can write this as sec square x. So इसे मैं linear differential equation that is dy dx plus py equal to q से compare करता हूँ. So p की वैल्यू क्या हो गया? p is your 3 sec square x, so I write here 3 sec square x and q क्या हो गया? q हो गया sec square x, right? So हमें पहले क्या फाइंड करना है? To solve the linear differential equation, integrating factor. So I will find here the integrating factor here, right? So integrating factor क्या होगा? E to the power p dx. So e to the power p is basically what? 3 sec square x, right? So I write here 3 sec square x dx. So this is what? 3 sec square x का integration क्या होगा? Sec square x का integration 10x. So this is what? 3 10x, e to the power 3 10x. Now its solution क्या हो जाएगा? Y into if. So y into if equal to what? Integration q into if dx, q into if dx plus what? C. Okay, so just I put this value here. So y e to the power what? 3 10x. So I write here 3 10x. q क्या है हमारा? q है हमारा sec square x. So I write here the sec square x. And if क्या है? a to the power 3 10x, right? dx plus c. So to integrate this, what I will do here is I will put the 10x as t. 10x को मैं क्या पुट कर रहा हूँ यहाँ पे? t. सो दैट डिफ्रेंशिएट करता हूँ मैं इसको. डिफ्रेंशिएट करने पे 10x का डेरिवेटिव क्या होगा? sec square x. सो आई राइट हियर sec square x dx क्या होगा? dt. सो नाउ दिस रिजल्ट इज y e टू द पावर 3 10x, राइट? यहाँ पे हमारा हो गया e टू द पावर 3t. दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 3t एंड sec square x dx क्या बन गया हमारा? dt प्लस c. ओके, सो e टू द पावर 3t का इंटीग्रेशन. सो वी हैव हियर द y e टू द पावर 3 10x एंड e टू द पावर 3t का इंटीग्रेशन हो गया e टू द पावर 3t डिवाइडेड बाई 3 प्लस c. t की वैल्यू मैं वापस पुट कर देता हूँ, दैट इज 3 10x, राइट? t की वैल्यू ये हो गया बाई 3 प्लस c. सो फ्रॉम हेयर वी गेट y क्या हो गया? ये डिवाइड हो जाएगा तो दिस विल बी 1 बाई 3 प्लस c बाई e टू द पावर 3 10x, राइट? 3 10x. so this is the जनरल सॉल्यूशन. ओके, जनरल सॉल्यूशन. y इज बेसिकली फंक्शन ऑफ x. सो हमें क्या गिवन है यहाँ पे? y पाई बाई 4 जो है वो 4 बाई 3 है. y पाई बाई 4 की वैल्यू क्या है? 4 बाई 3. दिस इज y ऑफ x, राइट? y ऑफ x इक्वल टू, सो y पाई बाई 4 इज 4 बाई 3. सो आई राइट हियर 4 बाई 3. ओके फाइन. सो जस्ट अप्लाइंग दिस, तो y पाई बाई 4 इक्वल टू व्हाट? 1 बाई 3. दिस इज व्हाट? 1 बाई 3 प्लस c by e to the power 3 10 pi by 4, right? So 10 pi by 4 की वैल्यू कितना हो गया? 1. so this is what? 4 by 3. this is 4 by 3. y pi by 4 की वैल्यू 4 by 3 equal to 1 by 3 plus c by what? 3 e to the power 3 and 10 pi by 4 is 1. so now what we can write here? 4 by 3 minus 1 by 3 equal to what? c by e to the power 3. so this is 3 by 3. 4 minus 1, 3 by 3. so this is 1, right? equal to c by e to the power 3. so c की वैल्यू क्या मिल गया? e to the power 3. so we get c equal to e to the power 3. so therefore we get y of x. y of x क्या मिल गया हमें? y of x is what here? 1 by 3. so I write here 1 by 3. okay, 1 by 3 plus c की वैल्यू क्या है हमारा? e to the power 3, right? divided by e to the power 3 10x. so this is particular solution, and we are asked to find here, if you see, we are asked to find the y minus pi by 4, right? y minus pi by 4. so I will put here the x as minus pi by 4. so this is what here? 1 by 3 plus e to the power 3, right? e to the power 3 and e to the power 3 10 minus pi by 4. so this is 1 by 3 plus e to the power 3 and 10 minus pi by 4. so minus 10 theta. so minus 10 pi by 4 is 1. so it is power minus 3 basically. so this is 1 by 3, and so this power here e to the power 3 into e to the power 3. so we get here the 1 by 3 and plus e to the power 6. so y minus pi by 4 की वैल्यू अपने पास क्या आ गया? 1 by 3 plus e to the power 6. 1 by 3 and e to the power 6. so yes, we have the correct option. Option number first is the correct option. okay, let us continue with the next question. okay, the question number 3 here is the curve amongst the family of curves
रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ दे रखा है हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0 विच पासिस थ्रू 1, 1 इज, इसमें से कौन सा कर होगा, अ सर्कल विथ सेंटर ऑन एक्स एक्सिस एंड एलिप्स विथ मेजर एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस, a circle with center on y-axis, a hyperbola with transverse axis along the x-axis. First we will solve this differential equation. So given differential equation एक तरह से क्या है कर्व का, given differential equation जो है अपने पास वो given है x square minus y square dx, right, plus 2xy dy equal to 0, and this differential equation is basically the homogeneous differential equation. So what I do here is I just write in the standard form, that is dy dx के फॉर्म में पहले लिखता हूँ मैं इसके, तो 2xy dy इक्वल टू क्या होगा, इसको राइट हैंड साइड में लाऊंगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट, dx. सो यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन जो है dy dx जो है दैट वी गेट हियर द वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट 2xy, right. So this is what is a homogeneous differential equation, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी बेसिकली डू, वी पुट y इक्वल टू वी एक्स, राइट. सो इसे मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, जो सब्स्टिट्यूट किया मैंने, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा v प्लस एक्स, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स. सो देयरफॉर वी गेट हियर द v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स के लिए, राइट, इक्वल टू क्या है हमारा, इक्वल टू है यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो आई राइट योर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy. सो 2xy की जगह पे क्या पुट कर रहा हूँ मैं, वी एक्स. सो सिंप्लीफाइंग दिस, सो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, राइट. आई टेक, सो व्हाट आई डू हियर इज आई टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, राइट, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ. सो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पे ये वी स्क्वायर माइनस 1, राइट, डिवाइडेड बाई व्हाट 2x स्क्वायर वी. सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिया, राइट, एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर कैंसिल. सो एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट, वी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2v माइनस v, ओके. सो जस्ट टेक द एलसीएम हियर, तो 2v एलसीएम हो गया. सो दिस इज व्हाट वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर. So from here we get x dv by dx equal to minus v square. This is what minus v square minus 1 divided by 2v. Okay. Now we'll apply the variable separable method, right. So ये क्या हो जाएगा हमारा variable separable method. So 2v, right, 2v divided by यहाँ से v square plus 1 को मैं इस तरफ ले लेता हूँ, v square plus 1 dv, dx इस तरफ आ गया, माइनस साइन भी रह गया इस तरफ, dx by x वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर दिया. नाउ इंटीग्रेट करूँगा मैं इसे, तो 2v बाई वी स्क्वायर प्लस 1 dv, इधर क्या होगा माइनस इंटीग्रेशन dx बाई एक्स. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक फार्मूला अप्लाई होगा, दैट इज व्हाट आई राइट हियर, डायरेक्ट वी कैन अप्लाई हियर एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स dx. इसका क्या होता है log एफ एक्स प्लस सी, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में. सो वी स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करता हूँ मैं, तो दैट इज व्हाट 2v. So we can write this as log, we can write here the log v square plus 1 and right hand side में हमारा minus log 1 by x का इंटीग्रेशन, right. So ये क्या हो जाएगा log x plus I also add the constant as c, log c, right. So this is what y की वैल्यू में v की वैल्यू पुट कर देता हूँ, v is what y by x. So y square by x square plus what 1 equal to what we can write this as log c by x, log m minus log n, log m by n. So this is what y square plus log हटा दिया हमने x, y square plus x square by x square equal to what c by x. So we can cancel this one x. So we get here the y square plus x square equal to cx. So from here we get x square plus y square minus cx equal to what 0, But this curve is passing through what? This curve is passing through 1, 1. So curve is passing through 1, 1. So put here x equal to 1 and y equal to 1 in the result, right. So here 1 plus 1 minus c into 1 equal to 0. So we get c equal to what 2. हमने c की वैल्यू क्या फाइंड कर लिया 2. So therefore we get the curve
curve as what? X square plus y square minus 2x equal to what? 0. So this is basically the equation of circle. We can simply compare this equation with the standard form of equation of circle, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, right? So here center is what? If you compare, the center is minus g minus f, right? And radius is what? Radius formula I just also write. Radius formula is what? G square plus f square minus c. But we have to find the center basically, because in the option center is there. So 2z equal to here minus 2. So I write here 2z equal to minus 2. So from here we get g equal to what? G equal to what we have here, the 2z equal to minus 2. So yes, g equal to what we have here? G equal to minus 1. And 2f equal to what? 0, right? There is no coefficient of y here, so f is equal to 0. So therefore center is what? Minus g minus f, so 1 and 0. So this point lies on x axis, right? So this is the equation of circle with center 1 comma 0 that lies on x axis. A circle with center on the x axis, right? So correct option is option first is the correct option, right? Let us continue with the next question. Okay, so the question number 4 here is we have the y of x. If y of x is the solution of the differential equation, this one, right, x greater than 0, where y of 1 is 1 by 2 e to the minus 2, then which option is the correct option? So given differential equation, पहले मैं लिख लेता हूँ. Given differential equation is what here? Given differential equation is dy by dx plus what? 2x plus 1 by xy into y equal to what? E to the power minus 2x. So this differential equation is also a linear differential equation. So here if we compare this, so p we get here the 2x plus 1 by x, ये हमारा p हो गया. एंड q जो है वो हमारा क्या हो गया? e to the power minus 2x. q is what? e to the power minus 2x. So इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें पहले फाइंड करना होता है, दैट इज व्हाट? e to the power p dx. So p dx is 2x plus 1 by x dx. Okay, fine. So now what I will do here is I just write this way, 2x by 2x. So this is what? 2 plus 1 by x, right, dx. So now we'll integrate this. So e to the power 2x 2 dx, integration of 2 dx is 2x, and 1 by x is log x. 1 by x is integration is log x. So we can write this result as integrating factor as if as e to the power 2x. We can write this as e to the power 2x into what? E to the power log x. But log x, e to the power log x is x basically. So e to the power 2x into x, e to the power x into x is integrating factor. So we have found the integrating factor, right? X e to the power 2x. Now we will find the solution. So its solution is basically what? Its solution is y into if. So y into if is what? X e to the power 2x. Okay, equal to what? Q. What is Q? So we have Q here is, if you see in the question, that we have the Q, that is e to the power minus 2x. So I write here e to the power minus 2x, right? E to the power minus 2x, and if is what? X e to the power 2x dx plus c. So what we can get here? The integration x e to the power minus 2x plus e to the power 2x. So that becomes e to the power 0, so 1. So dx. Now we'll integrate this. इसको integrate करने पे क्या मिलेगा? x square by 2 plus c. So this is y into x e to the power 2x, right? So we get this result here. So now what we can do here is we can write this y of x, right? Y result equal to y is what basically? So we get y equal to, we can divide this, x square by what? X square by 2x e to the power 2x plus what? प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या? प्लस c by x e to the power 2x, right? So we can cancel this one x. So y of x basically, y is a function of x. So x by 2 e to the power 2x plus c by x e to the power 2x, right? So we get this general solution. Okay, now what we have to find here? We have to find here basically, if you see here, the first we can find y1 equal to, we'll apply this condition, y1 equal to 1 by 2 my e की power minus 2, right? y1 by 2. So y1 by 2 की वैल्यू जो है y1 जो है वो क्या गिवन हमें?
1 by 2 e to the power minus 2, right? So we'll apply this condition here. So y1, so function क्या है यहाँ पे, हमारा रिजल्ट जो है वो है x e by 2 e to the power 2x, right? x by x की जगह पे क्या पुट कर रहा हूँ मैं 1 by what 2 e to the power 2x. so 2x की जगह पे क्या 1, right? x की जगह पे क्या पुट कर रहा हूँ मैं 1 पुट कर रहा हूँ, right? प्लस व्हाट प्लस c by क्या है x की जगह पे 1 एंड e to the power what e to the power 2 into 1 that is 2. okay fine. so y1 is basically 1 by 2, so I write 1 by 2 e to the power minus 2 equal to what 1 by 2, ये क्या है हमारा e to the 2 into 1, so that is e to the power 2. so ऊपर जाने पे ये क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस c by e to the power 2. so ये तो कैंसिल आउट हो गया एक तरह से, 0 इक्वल टू क्या हो गया c by e to the power 2. so from here we get c equal to 0. c की वैल्यू हमें क्या मिल गया 0. so therefore we can write the differential equation solution as y of x. y of x की वैल्यू जो है वो क्या हो गया हमारा, y of x जो है वो x by हमारे पास क्या है 2 e to the power 2x, राइट? और c की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है, c की वैल्यू हमारा 0 है, सो दिस रिजल्ट विल बी 0. सो फाइनली वी गेट y of x एज x by 2 e to the power 2x, x by e to the power 2x. or we can also write this as 1 by 2 x e to the power minus 2x. so this is solution of y of x. now we have to check with the option, right? we have to check with the option. okay, so y of x is this one. so basically in the option y log 2 की वैल्यू log 4, right? we will check with the option. so अगर मैं y log 2 की वैल्यू निकालूं, will that be correct option? so y log 2, right? log 2 की वैल्यू मैं निकालूं, so this is 1 by 2, right? log 2 and e to the power what minus 2 log 2, right? log 2, so this will be what 2 to the power minus 2, right? so this is what 1 by 2 log 2, right? and ये क्या हो गया e to the power minus 2, so 2 to the power minus 2 basically. so 1 by 4, 1 by 8, right? 1 by 8 log base e2, right? so first option is not correct, first option is not correct. if you see the first option is not correct. okay, this option is not correct. second option, if we check, right, log base e2, is this matched there? no, that is also not matched, right? That is also 1 by 8 log base e2. here is what we have here 1 by 4, so this option is also incorrect, now y of x is decreasing here in the interval 1 by 2, 1 or 0 or 1. so we have to just use the decreasing function concept. so for that I will differentiate this function y of x जो है हमारा, y of x जो है वो 1 by 2 है x e to the power minus 2x है. तो y of dash पहले मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, y dash x फाइंड करता हूँ, 1 by 2, राइट? x का डेरिवेटिव हो गया 1 e to the power minus 2x, देन व्हाट 1 by 2 x e to the power minus 2x into minus 2x का डेरिवेटिव, सो minus 2. ओके, सो इसमें क्या कॉमन है 1 by 2 e to the power minus 2x को हमने कॉमन ले लिया. सो व्हाट डू वी गेट हियर, ये हमारा क्या होगा 1 minus 2x, राइट? सो फर्स्ट डेरिवेटिव पहले मैं इंटरवल फाइंड करने के लिए क्या करूँगा y डैश x को 0 से इक्वेट करता हूँ, राइट? फर्स्ट मैं क्या करूँगा y डैश x को 0 से इक्वेट करूँगा, सो दैट इज़ व्हाट यहाँ से हमें 1 minus 2x बेसिकली इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या मिलेगा 1 by 2, राइट? नंबर लाइन पे अगर मैं प्लॉट करूँ इसको, नंबर लाइन पे प्लॉट करूँ, सो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1 by 2, right? so this is 1 minus 2x, so this side will be negative and this will be positive, wavy graph, right? wavy sign graph. so this is decreasing in the interval 1 by 2 to infinity, right? 1 by 2 to infinity. so what option is there, so decreasing in the interval, right? decreasing in the interval 1 by 2 to 1, yes, in decreasing, right? so correct option is option 3, right? okay, let us continue with the next question. okay, so in the question number 5th we have the differential equation here, the dy dx equal to क्या given है हमें, differential equation जो है वो given है x minus y whole square, y of 1 1 है, right? then solution पूछा गया है differential equation का.
बेसिकली दिस क्वेश्चन इज योर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का हो गया, x माइनस वाई होल स्क्वायर है यहाँ पे. सो टू आई पुट हियर द x माइनस वाई को ना t मान लेता हूँ मैं, राइट. सो दैट डिफ्रेंशिएट करने पे क्या रिजल्ट आएगा. सो दिस इज डी एक्स बाई डी एक्स वन हो गया माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वॉट डी टी बाई डी एक्स, dt by dx. So from here we get what d1 minus dt by dx, 1 minus dt by dx equal to dy by dx. So I will just replace this dy dx as 1 minus dt by dx. So I write here 1 minus dt by dx equal to what, t square, equal to t square. So I write here t square. Okay. So now I will simplify this. So we can write this as 1 minus t square equal to what, dt by dx. After that we will apply the variable separable method. So dx equal to what, dt by 1 minus t square. Now simply integrate this. So dx integration equal to what, dt by 1 minus t square, dt by 1 minus t square. So dx का integration x हो गया, and here we will apply the integration formula dx by a square minus x square, and that is what, this formula is 1 by 2a log a plus x by a minus x plus c. So this formula we will apply here. So x equal to what, 1 by 2 a is 1 log 1 plus t divided by what, 1 minus t, right, plus c. So this formula we have applied there. So t क्या है हमारा, t जो है वो अगर मैं हम लोग देखें तो वी कैन राइट दिस 1 by 2, राइट, log t की वैल्यू हमारा है 1 plus x, 1 minus x minus y. t is what, t is here x minus I. So we put here the x minus y. Okay, x minus y divided by what, 1 minus x minus y. Okay, plus what, c equal to x, So from here if you see, this is what we can write, 1 by 2 log 1 plus x minus y divided by 1 minus x plus y plus c equal to x, or x plus c you can write, you can add constant either side. So here the option first is not correct. Second option is what here, minus log 1 minus x plus y divided by 1 plus x minus y, 1 minus x plus y. Okay, so the sign here is 1 by 2, right, 1 by 2. So what we can do here is, we can this 2, so we can write this way. Even I can take this log, my calculation log 1 plus x minus y divided by 1 minus x plus y. This is what, x minus c, and so 2 will be multiplied here, right, 2 will be multiplied. So we get the solution here as log क्या हो गया, log अगर मैं देखूँ इसको तो 1 plus x minus y. So I write here 1 plus x minus y, 1 plus x minus y, and denominator is 1 minus x plus y equal to 2 times what here, c minus x, c minus x or x minus c, this is what here, x minus c, right, x minus c. Okay, x minus c. Now we have to see the option. So here the 2 times x minus c. Okay, also we need to apply the condition here, y1 is 1, so fine, we apply the condition here, y1 is 1. So y1 is 1, so log this is what, 1 plus 1 minus 1 divided by 1 minus 1 plus 1 equal to what, 2, right, 1 minus c, So this is basically what, log 1 is 0. So 2 minus 2, 1 minus c, So from here we get 1 minus c is 0, so c is 1, So we get the solution as, particular solution as 1 plus x minus y divided by 1 minus x plus y, right, equal to what, 2 times x minus 1, 2 times x minus 1. So 2 times x minus 1 is here, and here minus log 1 minus x. Okay, so log basically what is that, log formula is basically, we can write, if we have m by n here, so we can write minus log n by m, So just if you reciprocate this, so we can write here minus log, so ये हो जाएगा 1 minus x plus y divided by 1 plus x minus y
equal to what? 2 times x minus 1. 2 times x minus 1. If you see the option, minus log 1 minus x plus y divided by 1 plus x minus y equal to what? 2 times x minus 1. So yes, correct option is option number 2. Let us continue with the next question. Okay, the question number 6 here is what here? The question number 6 is y equal to y of x be the solution of this differential equation, and condition is given 2y2 right equal to log 4 minus 1. Then ye की value हमें find करना है. So first I write here the given differential equation. So given differential equation is what here? X dy by dx plus y equal to what? X log ex, right? Base is e. So I just write this way. So this is also a linear differential equation, right? So y by x dividing throughout by x. So यहाँ पे क्या हो जाएगा? log x. Log base ex I write here ln x, right? ln x. Okay. So just comparing this differential equation with the standard form of linear differential equation, that is dy dx plus py equal to q. So we get here the p क्या है हमारा 1 by x. So I write here 1 by x. And q क्या है हमारा? q जो है वो हमारा log x हो गया, right? So we'll first find the integrating factor if. So integrating factor is e to the power p dx. What is p here? 1 by x. 1 by x dx. So 1 by x का integration और क्या होता है? Log x, right? So we can write this as x, right? E to the power log fx is fx basically. So integrating factor is x. So its solution is, इस differential equation का solution क्या हो जाएगा? Its solution is y into if equal to what? Equal to q into if, right? Q into if dx plus c, right? Plus c. Okay, so we put this value y I of f. if जो है integrating factor जो है हमने क्या find किया? x find किया. So I write here the x, right? x. q क्या हमारा? q हमारा log x है. So I write here the log x into if क्या हो गया? x dx plus c. So now I will integrate this, right? Okay, log x. Okay, so I will integrate this. So to integrate this I will use the by parts formula, right? By parts formula. So this is our u and this is v, right? So integrating by parts. So first function log x, then integrating the second function, so x dx minus what? Integration. So differentiating the first function, that is log x को differentiate करूँगा मैं, right? And integrate करना है second function को, so x dx and dx plus what? c. So ये क्या हो जाएगा? log x, right? And x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x स्क्वायर बाई 2. ओके, माइनस इंटीग्रेशन log x का हो गया 1 बाई एक्स, x का क्या हो गया? x स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन, राइट? dx प्लस c. सो ये कैंसिल आउट हो गया. सो यहाँ पे क्या बना? x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस x का इंटीग्रेशन फिर से होना है, सो x स्क्वायर बाई 2, सो 4 हो गया ये, प्लस का c. सो वी गेट हियर द y जो फंक्शन है बेसिकली x का, y क्या हो जाएगा? x इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, सो दैट इज x डिवाइड होगा तो कैंसिल होगा, सो दैट इज x बाई 2 log x माइनस वॉट? माइनस यहाँ पे हो जाएगा x बाई 4, x यहाँ भी डिवाइड होगा x बाई 4, सो आई राइट हियर द x बाई 4 प्लस c बाई x. So this is y of x, this is what? y of x equal to x by 2 log of x minus x by 4 plus c by x, right? So this is the general solution. Okay, now what is next here? Condition हमें given है y2, पहले y2 निकालना, फिर 2y2 की वैल्यू log 4 minus 1, तो 2y2. सो y2 पहले मैं फाइंड करता हूँ. y2 जो है, y2 हमारा क्या हो गया? y2, सो 2/2 log 2, राइट? log 2 माइनस 2/4 प्लस c बाई 2. ओके, सो इसमें मैं क्या करता हूँ? ये कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2y ऑफ 2. सो ये क्या हो गया? 2 log 2 माइनस यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस c हो गया ये, और 2y2 की वैल्यू जो है, 2y2 की वैल्यू है log 4 minus 1. सो आई राइट हियर log 4 minus 1, राइट? log 4 ln 4 minus 1 बेसिकली, और ये पावर में आएगा log 2 तो ये भी log 4 बन जाएगा माइनस 1 प्लस c. सो log 4 से log 4 कैंसिल, इवन माइनस 1 से ये माइनस 1 भी कैंसिल, c की वैल्यू 0 हो गया, c की वैल्यू 0. सो वी फाइंड हियर द y ऑफ x क्या हो गया? y ऑफ x जो है वो हमारा x बाई 2 log x माइनस x बाई 4
minus x by 4. So I write here the minus x by 4. Okay, c is 0, right? So putting c, so we get this solution. Now this is the particular solution. Okay, now what we have to find here, the ye. So ye की value अब मैं find करता हूँ, ye. So y is e by 2, right? This is log e minus e by 4. Log e is 1, so e by 2 minus e by 4. So just take the LCM, that is 4. 2e minus e, so that is e by 4. So ye value is e by 4, right? Ye value is e by 4. So if you see the option e by 4, so yes, we have the correct option here, option number 3, right? Hope you will be clear with this solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Please consider subscribing my channel so that I can upload more videos. Bye bye, take care.